कॉलेज में फेस्ट होता है, सबकी कॉलेज में होता है, पर हर जगह ऐसे लोग नहीं होते जो इस फेस्ट को अपना बना ले। मैं एक ट्रॉफी हूँ, हर साल किसी नए हाथों में चला जाता हूँ, पर कहानियाँ वो मेरे पास रह जाती है। हर कॉलेज में एक ही सवाल होता है, यूथ फेस्ट कब है भाई? पर इसका जवाब हर किसी के लिए सेम नहीं होता। कोई नया था तो कोई पुराना। किसी के लिए ये यूथ फेस्ट पहला स्टेज था, किसी के लिए आखिरी मौका। ये सिर्फ कला का मेला नहीं था, ये दोस्ती का पिटारा था। कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखती छोटी हैं लेकिन महसूस बड़ी होती है। कुछ कहते हैं यूथ फेस्ट एक कंपटीशन है, पर ये कंपटीशन कम, एक खास फीलिंग ज़्यादा है। चेहरे पर उदासी भी थी, पर जीतने की आस भी थी। जिन्होंने सिर्फ स्टेज नहीं जीता, अपना डर भी हारा। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए था कि एक बार वो कह सके, मैंने कर दिखाया। ये एक फेस्ट था जिसमें ये 40 से भी ज़्यादा लोग जीने आए थे। हर किसी के पास था एक स्ट्रगल, एक लाफ्टर, एक मोमेंट जिसमें दिल भर आया था। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ यूथ फेस्ट के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो कभी बैकग्राउंड में थे, आज स्पॉटलाइट के लायक हो गए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगले कुछ मिनट में जो तुम देखो, सुनो, महसूस करो, शायद वो तुम्हें कुछ याद दिला दे या कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। और वो कहते हैं ना कि Without suffering, nothing comes easy. तो चलिए इस यूथ फेस्ट के सफ़र में। और ये सफ़र था टीम। इस मुंह का मैं माया का मैं प्यादा नहीं, कोई जड़ से यूं उखाड़ ले ऐसा पौधा नहीं। शतरंज का खेल जो ये जिंदगी, तो मछली बन खेलूं हर चाल मेरी। मेरी तरक्की का तरीका क्या तू ही तय करेगा? बनूं मैं घोड़ा या सिपाही, ये भी तू ही तय करेगा। मेरी हाथी जैसी सीधी चाल या ऊंट की जैसी टेढ़ी चाल, पैतरे वजीर से हो कमाल या राजा जैसा बोरंग हाल। तू न तय करेगा, तू न तय करेगा, तू न तय करेगा मेरा किरदार। तू न तय करेगा, तू न तय करेगा, तू न तय। सोच रहे हो ना इतनी ग्लोरी क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि ये यूथ फेस्ट है जहाँ कोई जीता तो कोई हारा, और कई लोग सिर्फ दिल से खेले। पर इस सफर में रैंक से ज्यादा कहानियां इंपॉर्टेंट थी। ये डॉक्यूमेंट्री उन लोगों के लिए है जो जीते चाहे नहीं, पर खुद से हार भी नहीं मानी, जिन्होंने ट्रॉफी भले ना जीती पर खुद पे गर्व जीत लिया। तो चलिए उन कहानियों के सफर पर जहाँ डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी मैटर करती है। हर चाल मेरी, हर चाल मेरी। Hello, hello. Mic testing 1 2 3. Mic testing 1 2 3. Mic testing 1 2 3. Hello, hello. મસ્ત શરદી થઈ ગઈ છે બસ મજામાં. I'm fine. Sorry? Very nice, great. I am fine. What about you? હાય
Good. You can see this thing. All good? Because, I mean, I'm at Ilsa's, which means I'm always good. Fashion show, procession, one act, mime, and skit. Mono act, one act, skit, and cultural procession. 3 theater events. One act, skit, and short film. बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। One act play, procession, fashion show, and theater. One act. One act, then I was in fashion show, and then I was in procession as holding that poster. મિમિક્રીમાં હતો, વન એક્ટમાં હતો, બોલિવૂડ ક્વિઝમાં હતો, એન્ડ શું કહેવાય સ્કીટમાં, એન્ડ શોર્ટ ફિલ્મ એઝ અ મેનેજર. Doing graffiti. Clay modeling, collage, and installation. Graffiti. So I was in Rangoli and I was in fashion show, I was in installation, I was in short film. It is time for us to prioritize human intelligence, creativity, and ethical considerations over the unchecked growth of technology. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. It was debate, part of literal events. Treasure hunt, fashion show, and quiz. Yeah, I participated in quiz. Quiz and poem recitation. Basically, I was in debate, procession, and overall youth festival management. hey, hello. So apart from Ramshar and Antakshari, I was in fusion dance, folk dance, cultural procession, and mime, which comes under theatre. Classical dance, fashion show, fusion dance, folk dance. Fashion show, folk dance, fusion dance. હું મિશ્ર રાસમાં હતી અને આગલી વખતે હું કાલબેલિયામાં યુથ ફેસ્ટ में ઓનલી સોલો डांस कॉम्पिटिशन कंटेम्पररी स्टाइल थी उसकी. એક જ ઇવેન્ટમાં હતી, ફોક ડાન્સમાં. ફોક ડાન્સ અને માઇમમાં હતો. अंताक्षरी, देन वेस्टर्न म्यूजिक, फिर शॉर्ट फिल्म में थोड़ा बहुत सा काम कुछ महान लोगों ने मुझे दिया था, मम्मी बना दिया गया था. I was in western singing, group song and Indian group song. સૌથી પહેલાં મેં ઇન્ડિયન મ્યુઝિકમાં આપ્યું હતું મારું ઓડિશન, પછી વેસ્ટર્નમાં અને બોલિવૂડ ક્વિઝમાં. તો એ ત્રણમાં હું સિલેક્ટ થઈ ગયો હતો, ત્રણેયમાં આપ્યું. Participated in Western group song only. Western solo and group song. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह. Only one competition which is Bollywood quiz. યુથ ફેસ્ટમાં એક સોલો ઇવેન્ટમાં હતી. ઇટ વોઝ ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ, હિન્દુસ્તાની અને ઇન્ડિયન ગ્રુપ સોંગમાં હતી. ઇન્ડિયન ગ્રુપ સોંગ. કે તિટ તિટ તાકે ત્રિગડ તકા કે ત્રિગડ તાકે દિકિટ કરદે તિટ કતા ગદી ના કરતા દિંગડ ધા તિટ કતા ગદી ના કરતા દિંગડ ધા તિટ કતા ગદી ના કરતા દિંગડ ધા. तो चलिए जानते हैं इनके लिए यूथ फेस्ट क्या था. તો યુથ ફેસ્ટથી હું એને બહુ બીતો હતો. એનું કારણ શું છે કે મને જે સિનિયર પાસે સાંભળવા મળ્યું કે યુથ ફેસ્ટ આવે ને એટલે કોલેજવાળાથી પ્રેશર આવે, તમને રજા ના મળે, કારણ કે નવરાત્રી જેવો તહેવાર ને આપણે ગુજરાતી માટે નવરાત્રી પહેલાં હોય એમ, અને અમે હોસ્ટેલમાં રહીએ એટલે અમારે નવરાત્રી કરવા અમારા ઘર હોય ત્યાં જવું જ પડે, અને કોલેજમાંથી રજા ન આપે કારણ કે યુથ ફેસ્ટનો ત્યારે માહોલ હોય ને યુથ ફેસ્ટ નજીક જ આવે, નવરાત્રીના થોડાક દિવસ પછી જ હોય. એટલે આના કારણે અમને કોલેજમાંથી રજા ના દી. અને આવો નવરાત્રી જેવો તહેવાર તો ફેમિલી સાથે કરવાની મજા આવે, આપણા જૂના ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય, ગરબાવાળી આખી ટીમ હોય તો કેવું જમાવટ પડે. આના કારણે યુથ ફેસ્ટની અમારે એવી મગજમાં ઇમેજ બનેલી હતી કે યુથ ફેસ્ટમાં રહેશું ને તો આપણે એક રીતે ટોર્ચર વધારે થાય છે, આપણે રજા નહીં મળે અને કોલેજમાં 7-7, 8-8 વાગ્યા સુધી રાતે આપણે રહેવું પડશે સાંજે પ્રેક્ટિસ માટે. તો આના કારણે મેં ફર્સ્ટ યરમાં તો સૌથી પહેલાં યુથ ફેસ્ટિવલમાં ભાગ જ ન લીધો. મને ઘણા સર મેડમ કહેતા કે ભાગ લ્યો, પણ અમે આ વસ્તુથી ભાગતા
સર મેડમ એમ કે ને કે ચાલો યુથ ફેસ્ટનું નામ લખાવો તો અમે હરવેકથી પાછળથી નીકળી જતા. પણ બીજું યર આવ્યું ને હું ને મારો મિત્ર બહાર બેઠા હતા તો અંદર ગરબાના બધી પ્રેક્ટિસ ચાલુ હતી. તો ગરબાનું જે મ્યુઝિક સાંભળ્યું ને તો અમને ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો કે આમાં શું થાય એમ. ત્યારે ખબર પડી કે રાસ છે અને રાસમાં પછી અમે ભાગ લીધો. People were very hyped about it. So they were trying to make us understand what the hype is about. So it was like everybody was just trying to make us understand that this thing is very important and this thing is like something we would want to carry in the next upcoming years of our college and we would want to be a part of. So they were all very excited and very eager. It is interesting that everyone is talking about Youth Fest and all. And मैं कहना चाहती हूँ कि साज में इवेंट्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो अपने डेवलपमेंट के लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. इवन हम भी कभी कभार नहीं जानते कि हम में क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है, अपने में कुछ स्किल्स है जो हमारे अंदर है जो हमें नहीं पता होती. तो हमें इवेंट्स द्वारा पार्टिसिपेट करके पता चलता है कि हमें मतलब इसमें भी हमें कुछ आता है, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं. એક ઓપોર્ચ્યુનિટી લાગી, સારી એક ઇવેન્ટ થાય છે. મને સ્કૂલમાં પણ અમારે એવી ઇવેન્ટ્સ થતી હતી. મને સ્કૂલ પણ એવું થયું કે હવે સ્કૂલમાં એટલું પાર્ટિસિપેટ ના થયું મારથી તો હવે હું અહીંયા કરી શકીશ. तो यूथ फेस्ट मेरे लिए तो प्यार है क्योंकि म्यूज़िक मेरे लिए मेरा प्यार है. तो यूथ फेस्ट तो मेरे लिए बहुत मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है. I wasn't really aware about Youth Fest. So like મને through seniors they told me कि Youth Fest है, there are different events, you have to participate and like it's a nice opportunity. And I love music, like I've been learning music since I was a child. So મને music નો ખબર પડી, so I was like okay, let's do it. I did not know Youth Fest is such a huge thing. So it was very fun, like managing lots of people at once, and like it was really fun. In first year I got to know how to manage people, so it was a very fun experience leading and also participating in as first time. The college started in July. All the seniors were like youth fest आ रहा है, youth fest के टाइम ये करेंगे वो करेंगे. So पहले I was like okay whatever करके. But when the time itself came for me to participate and seeing the competitive environment and all the preparations that literally every single person from one student to all the faculty members, that I was like okay now finally I understand what all this hype was about. तो यूथ फेस्ट में कुछ पार्ट लेने का डिसाइडेड नहीं था क्योंकि इंट्रोवर्टेड हूँ, सोशली ऑकवर्ड इंसान, तो करने का कोई मन नहीं था. पर सीनियर्स ने थोड़ा मोटिवेट करा तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेता हूँ. મિક્સ ફિલિંગ. કોલેજ લાઈફમાં મેં ફર્સ્ટ યરમાં જોયું કે મેં આખા કોલેજમાં ફર્સ્ટ યરમાં કંઈ કર્યું જ નહોતું. યુથ ફેસ્ટમાં પછી જ્ઞાનોત્સવમાં, ઇન્ક્વેસ્ટમાં તો મોસ્ટલી હોસ્ટેલમાં જ આખો દિવસ હું મારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતો હતો. પછી આમ એકદમ થોડુંક હિટ થયું કે ભાઈ આવી રીતના કાંઈ કોલેજમાં કોઈ કોન્ટેક્ટ નહીં થાય માણસો સાથે, લોકો સાથે, કોન્ટેક્ટ વધે અને કંઈક લાઈફમાં નવું શીખશું. એ માટે મેં કીધું આ વખતે હું ઇન્ક્વેસ્ટમાં યુથ ફેસ્ટમાં બધી રહ્યો છું, પાર્ટિસિપેટ મેં કર્યું. I've seen my seniors who have participated in youth festivals, who have grown as a personality. It inspired me that probably yes, if I would participate then I can definitely make something out of it for myself. It might help me to grow my knowledge or even my personality in general. Best thing I loved about Youth Fest was you just have to be raw. It's not about winning, it's not about losing, it's just about expressing your emotions and learning something new. I loved it. बहुत मज़ा आया. तो यूथ फेस्ट इज़ लाइक यार लाइक थोड़ा ओवर एक्टिंग लग रहा होगा बट इट्स अ फीलिंग. એટલી મજાની વાત છે ને કે ના પૂછે. આમ લાઈક youth fest is youth fest. To be very honest, since the day I took my admission at ILSAS and officially came here as a student, the very first word that I heard in the college was youth festival. So our seniors had built a image that whenever we listen to youth fest, you know that star emoji eyes we have, that used to click in almost everyone's mind. It's not something that you have to do from your heart, something that comes from your heart. That is how I used to look at it. It wasn't about managing students, it was about learning from them, because ultimately we are dealing with young minds.
So how they think or how they react to certain situations was something novel and a learning experience for me. Whenever I think about Youth Festival and INSATs, definitely it is a nostalgic moment for me, and I take absolute pride in telling that I love being in this entire journey of youth festivals. And Youth Festival is one such kind of a force where you literally can excel your capabilities. આટલું huge હશે એ મને નથી ખબર. First time heard Youth Fest, I was scared. It's a very big platform. That's what it seemed like. And going up there, by the idea of going up there, I was very scared. माइक से पहले थी सिर्फ खामोशी, स्पॉटलाइट से पहले सिर्फ साथ था। स्टेज पर सब नहीं होता, कुछ कहानियां रिहर्सल रूम में लिखी जाती है। पसीना गिरा, वक्त निकला, लेकिन किसी ने गिव अप नहीं किया। बॉन्डिंग बनी बिना किसी स्क्रिप्ट के। अब जो तुम सुनोगे वो उन जज्बातों की कहानी है जो परफॉर्म कभी नहीं हुई। थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स થયા છે, but all I think 1-2 months youth fest ની practice હતી. We did not even fight once. Like, it was like whole big family, and I was very happy with that. It was fun because compared to individual events, group events were more engaging, as it did not feel that alone. भाई वो ऐसा नहीं था कि तुम अलग, तुम ये अलग, वो अलग, सब एक साथ मिल के रहने वाले। कुछ भी डिसीजन हो, टीम वर्क हो, सब साथ में। कुछ भी हम लोग का होता था, हमारे मैम, कोऑर्डिनेटर्स, લક્ષ્મી મેમ, वो सबसे बेस्ट थे। બહુ હાર્ડ હતું મારા માટે, કેમ કે મારી બોડીને લીધે પહેલાં મને ના પણ પાડેલી કે તારાથી નહીં થશે એમ, પણ મેં ટ્રાય કરેલું કે ના મારે રહેવું જ છે અને મારે એ લોકોને બતાવવું જ છે કે બસ મારી પાસે છે કે હું કરી શકું છું। मज़ा आया, झगड़े भी हुए, बहुत कुछ chaos भी हुआ था, पर मज़ा आया। ધ બેસ્ટ ટીમ એવી રીતે વી હેડ ગુડ રેપો બિટવીન ઈચ અધર। કોઈને કહેવાનું હતું કે નોટ ડુઈંગ ધીસ વેલ, વી યુઝ ટુ જસ્ટ સે ઇટ કે ભાઈ આ નથી આવતું, અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે। અને વી ટ્રાઈડ, લાઈક વી વર 3 કોઓર્ડિનેટર્સ, તો અમે ત્રણેય જણે વી ટ્રાઈડ કે એવું ફીલ ના કરાય કે વી આર ધી કોઓર્ડિનેટર્સ, બટ वी आर जस्ट द नॉर्मल मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। टीम मेंबर्स काफ़ी अच्छे थे। एक्चुअली में ऐसा टाइम से लेके या फिर कुछ भी है, थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी टीम मेंबर हमारे सारे अच्छे थे और सब करने वाले थे। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं होगा या नहीं करेंगे। पहले स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सबके साथ हो गए, किसी को छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है और वो कोई सेंस नहीं बनाता, मत माना करो बुरा। That's why chai is important. Chai is very લાખો દિવસ સવારથી ઉઠીને દોડા દોડ કરવાની. Someday we had fight, but another day we are going really well, like we are doing fun and etc. I would say it was pretty hectic. Coming up early to the college, going late back home. So yeah, it did disturb my own sleep cycle, or let me say my personal affairs pretty much. So yeah, pretty hectic, tiring, yet I enjoyed it a lot. Wonderful. One of the best things about Youth Fest was the connections I made, because during Youth Fest, because up until that point I hadn't made any such friends or hadn't had any those like emotional bonding with anyone. But during quiz, my teammates Shabri Bhaiya, Nitya, and even Haley, Vaishvi Didi and Ved Bhaiya, those three were also essentially with us. Like we all spent the Youth Fest majority of the time together preparing for our respective events. So for that, at those time, there were great moments of laughter in between, where everyone was just sitting in Principal Ma'am's office, just tired. But then we were like, no, okay. Where Shabri Bhaiya would crack a joke, and we would just laugh. And like Vaishvi Didi would just say some like nostalgic story about their experience. So managing sometimes, managing an event is necessary, but managing yourself and having patience, controlling your outburst, and making sure that અહીંનો ગુસ્સો તઈ ના જાય ને ત્યાંનો ગુસ્સો અહીંયા ના આવે is very necessary, very very necessary. देखो, वो कहते हैं ना कि सफर में फन ना हो तो मजा नहीं आता। तो चलिए मैं इस बॉन्डिंग और प्रिपरेशन के बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ, क्योंकि लाफ्टर इज इम्पोर्टेंट और हंसने में ऐसे भी कोई टैक्स नहीं लगता।
चले नाड़ी और मैं चलूं खेले जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी चिमड़ी में लेके जाऊँ और सबको मैं सिखाऊँ क्या चिंता चिता चिता चिंता तता चिंता चिता चिता चिंता तता. A few moments later. मैं ऐसी एक्टिंग करूँगा कि सब कहेंगे कि यही रोल इसको ही मिलना चाहिए और आगे जाके भी इसको ही मिलना चाहिए. ઓડિશન્સ રાઉન્ડમાં મને નીકાળી દીધું કેમ કે મેડમને એક સોંગ ગવાયા સોના વાટકડી जिसके एक्चुअल लिरिक्स मुझे आज तक नहीं पता है और मैंने गाया है तो बहुत बहुत इनसिक्योर होते हुए मैं ऐसा गा रही हूँ. सोना वाटकड़ी रे केसर घोड़ा बालो मिया घोड़ा वाला और जो है नेक्स्ट ईयर अभी मुझे उस बात को सुन के निकाल दिया गया ना हो पाएगा, इनसे नहीं होगा. तो मैं आज शाम के कैबिन में जाके रो रही हूँ मुझे नहीं लिया इन्होंने. मैम बोलते वॉलंटियर करो ये वो, वॉलंटियर करके किया फिर मैं सिलेक्ट हो गई, लेटर ऑन में पार्टिसिपेट किया, सब अच्छे से हो गया. अब इस साल जब मेरा फाइनल ईयर है मैं टीम कोऑर्डिनेटर हूँ म्यूजिक इवेंट्स की, पर फिर से मुझसे ऑडिशन लिया है मैम ने, मेरे से फिर से यही गाना गवाया जिसमें मैंने फिर से गलत लिरिक्स गाए. पास टाइम ही नहीं होता कुछ खाने पीने का. तो एक बार हमें कुछ खाना था तो मैम ने बोला कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ, पर हमारी प्रैक्टिस मानसून में चल रही थी. सो ऑर्डर कैंसिल हो गया, उन्होंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन. सो हम जाके लेकर आए. सो हमारा सिर्फ एक ब्रेकफास्ट का ही जो बिल होता है इट वाज अराउंड 1000 और बाकी दूसरे इवेंट में उन सभी का लाइक हफ्ते का बिल 1000 होता है और हमारा सिर्फ एक ब्रेकफास्ट का बिल इतना ज़्यादा हो गया था. सफ़र आसान होता तो सब कर लेते, मुश्किल यही तो थी जो कहानी बना गई. बिना कैंपस, बिना फैसिलिटीज़, बहुत कुछ चीज़ों में हमें चैलेंजेस लेना पड़ा. लॉजिस्टिक्स वाइज, स्पेस वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज. Still I don't know the kind of effort students have given. Quite challenging. मुझे अभी लग रहा है जब challenges आपके सामने खड़े होते हैं ना, शायद हम ज़्यादा excel करें. Fashion show was delayed by 1 day because of the weather. So we were almost ready. Everyone had their makeup off. 2-3 people had their makeup on. Like we were ready to go on the stage. But then news came that the show is cancelled because of wind and weather conditions. So the next day again, full enthusiasm. From starting I guess 8 a.m. we were practicing constantly till 12 p.m. so that we could get it perfect till the last day. તો કે ટોપિક પર કશું મળતું જ નહોતું કે શું કરું, કેવી રીતે કરું, કારણ કે ગ્રાફિટી આખો જ નવું વસ્તુ હતી બધા માટે. यूथ फेस्ट में पहली बार ग्राफिटी હતું એટલે થોડાક નર્વસ હતા कि કેવી રીતે થશે, શું થશે. 3-4 इवेंट्स, उसको कब मैनेज करना है, कब क्या करना है. प्रैक्टिस सुबह 9 बजे से फैशन शो की प्रैक्टिस, उसके बाद से फ्यूजन डांस की प्रैक्टिस, उसके बाद से फिर अपना फोक डांस. फिर करते करते हम लोग को भाई ऐसा सोने का टाइम तक नहीं मिलता था. हम लोग रात को 11 बजे 12 बजे हॉस्टल आते थे, घर जाते थे. उसके बाद से भाई सुबह को 7 बजे उठने का है, कॉलेज जाने का है. तो वो टाइम मैनेज करना वो बहुत डिफिकल्ट. Practicing from morning till evening. Later on we had Navratri coming in between, which also disturbed us because Navratri being a festival, a prime festival for Gujaratis, they do want to dance, they do want to play Garba over there. So yeah, Garba happens in night and we need to practice in the morning. So pretty much it disturbed our practice sessions. A lot of patience
was the most difficult task, because the thing is, you are at a position where you are a bridge between the students and the faculties. They would come to you, talk about them. They would come to you, talk about them. Your duty is to make sure they do not turn against each other. Because Youth Fest things are limited to youth festival. Apart from Youth Fest, you have a college life. They are your teachers and they are your students. You cannot change that fact. So it's like getting complaints about teachers or getting complaints about students, but at the same time making them understand that beta je bhi hoye amranu chhe, do not take it personally, do not hold grudges, do not do this, do not do that. It was very, very difficult. If you are scared of it, that's I think the best time to go for it. સ્ટેજ ઉપર ડાન્સ કરવાનો એક અલગ જ મજા હતી, એક અંદરથી હિંમત આપવાવાળી ફિલિંગ હતી, જે આપણે સ્ટેજ ઉપર જઈએ ને જેની 10 કે 15 મિનિટ પહેલાં જે આપણને બીક લાગે કે મારાથી થશે કે નહીં, હું ભૂલી જઈશ, બધી ફિલિંગ આવતી હતી. Because I was nervous and I panicked a little bit. So I was like I was singing and I was loving it, the experience, the surround sound, it was everything so beautiful. I'm like, now it's my part, now it's my part. And I was like, I don't have to mess it. And that's why I did it, and it was not that bad, but it could have been better, it could have been like perfect, like which we did in practice. But I panicked and I was a little nervous, so તો 3 મિનિટ પણ ના બોલી શક્યો. That was very, very surprising for me. કે ડિબેટ પતાવીને બહાર નીકળ્યો તો આખો બ્લેન્ક હતો કે હું મારથી આવું થયું કેવી રીતના એમ. પહેલાં તો બીક લાગી થોડી, કેમ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું મેં. हाँ, थोड़ा हाथ जूझता था हमारा. तो स्टेज वाला जब हमारा फाइनल राउंड में अनाउंसमेंट हुआ तो सरप्राइजिंगली सब लोग थे, सब दोस्त वगैरह थे, सब ने चीयर करा, स्टेज के ऊपर गए. स्टेज वाला माहौल तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट ही होता है. वो एक कह सकते हो कि एक लाइफ टाइम मोमेंट है कि आपके दोस्त वगैरह आपके सामने ऑडियंस में बैठे हैं, वो आपके लिए चीयर कर रहे हैं, एक एक आंसर के बाद आपको चीयर मिल रहा है, तो एक अलग एड्रेनलिन होता है. उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग वो था जब हम आए थे, 3rd पोजीशन पे आए थे हम. तो उसके बाद भी थोड़े बहुत तो हम डिसअपॉइंट थे ऑब्वियसली, क्योंकि आना तो फर्स्ट ही था, वो तो मेन गोल था. स्टेज के ऊपर से नीचे उतरे, दोस्त वगैरह पहले से दौड़ के आ रखे हैं कि भाई सब भले ही 3rd पोजीशन आए पर फिर भी चीयर कर रहे हैं हम लोगों को. तो वो वाला मोमेंट बहुत सही था. તાન આવતી જ ના હોય, બિલકુલ ના આવતી, અને આમ એકદમ ડિપ્રેસ્ડ ફીલ કરતી હોય કે આજે આ વખતે જીતવાનું જ છે, અને કાઇન્ડ ઓફ પ્રિપેરેશનમાં આવું તો ના જ થવું જોઈએ, એવું બી આવે. ઇમોશનલ બી થઈ જતી હું ક્યારેક ક્યારેક કે કેમ નથી આવતું. અને જે દિવસે આવે એ દિવસે લિટરલી એવું ફીલ થઈ જાય કે આમ ખરેખર મેં એ ટ્રોફી લઈ આવી હોય ને એવી ફીલિંગ આવતી. तो इस बार हम गए और हम सब ऐसे हार्ट एकदम फास्ट बीट कर रहा था कि भाई पहला इवेंट है थिएटर का, ऐसे कुछ गलती हो गई क्या हो जाएगा, फंबल हो जाएगा. सब मैं डायलॉग एक बार रीडिंग ले रहा था मन ही मन में, और फिर जैसे हम लोग गए स्टेज पे तो ऐसा हो गया कि यार ये तो घर जैसा है. मतलब हम परफॉर्म कर चुके हैं पहले इस पे, तो स्टेज फियर जैसा कुछ तो था ही नहीं, बिल्कुल जीरो हो गया. फिर हमने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया तो मैं तो एकदम ही वो था, मैं अपने डायलॉग पे फोकस कर रहा था रादर ऑडियंस पे, क्योंकि वो फियर ही नहीं था. फिर बीच में हुआ कि लाइट चली गई बीच परफॉर्मेंस में, तो सब रुक गया. तो फिर भी मैं चिल था कि हमें पता था कि हम हमारी तरीके से हमें सब याद है, तो उतना पैनिक नहीं हुए. और जैसे ही लाइट आई हम रिज्यूम करने लगे.
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था स्टेज का। एक एक दो दो इवेंट में है, फिर इधर से उधर भागना है, उधर से इधर प्रैक्टिस में भागना है, ये करना है, वो करना है। હું થશે ઉપર જઈને કંઈક ખરાબ ન થઈ જાય આમ તેમ, પણ હું સ્ટેજ ઉપર જ્યારે ગયો ને ત્યારે મને નથી ખબર શું છે મને. I was just going with the flow અને it was beautiful કે પૂરું થઈ ગયું ત્યારે મને ખબર પડી કે નહીં હવે પરફોર્મન્સ પૂરું થયું છે. એ કોણ સામે છે હું મને કાંઈ યાદ નથી. One thing is that photograph is very tiring. For 8.5 minutes you're constantly dancing on the stage with no proper ventilation around you. But it's fun. But when that moment is approaching the moment when you go on stage, I do have this sort of nerve-wracking feeling. But then rather than being nervous, I enjoy that feeling. I enjoy being nervous because I know that once I'm on the stage, whatever nervousness or scared I am is just a moment prior to stepping on that stage. But once I'm on that stage, I'm in a whole different element altogether, and I do not think about anything else. 4 a.m. me and Krishna ma'am were talking at 4 a.m. in the morning that इसका ये नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका रेंटेड नहीं है, इसका फिटिंग नहीं है. So it was very pressurized till the last moment that ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. But everything went smoothly at the end. ડેન્ગ્યુ હો ગયા હતા. લાસ્ટ અમારા ફેશન શોની ડેટ આવી ગઈ હતી, લાસ્ટ 2 ડે પહેલાં આવી ગયો. અને મારી જગ્યાએ મારા સુપર સિનિયર રમેશભાઈ છે એમને મારી જગ્યાએ એમને આપવામાં આવી હતી. એટલે દુઃખ હતું થોડુંક કે ભાઈ એટલી મહેનત કરી છતાં હું ના પ્રેઝન્ટ કરી શક્યો. પણ મેં જોયું કે મારી જગ્યાએ કે નિમેશભાઈ બહુ સારું તેમને કર્યું છે. એટલે એક તરીકે હું મને વાંધો ન આવે. જીવનમાં અનુભવ કરવો જોઈએ બધાને. તો હા, એ બી અલગ અનુભવ હતો મિમિક્રીનો. તો બસ સ્ટેજમાં થોડા ફાફા પડી ગયા હતા, એ વસ્તુ અલગ છે. બટ ચાલે, હવે નેક્સ્ટ યર अच्छा परफॉर्म करें और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. फिनिश. दुबकीनस पे हाथ दबा दिया. We designed was very intricate and very detailed. So I feel that Isam Didi helped us a lot in that. Like she was our main costume designer, so she helped us a lot. Medusa as our showstoppers for fashion show. Then we had Fire Queen, Ice God. Then we had Grim Reaper, we had Witch. Then we had Alchemist, we had Mother Nature, and we have Celestial Queen. And we had Mermaid as well. So these were all the variety of range of characters. Everyone was opposite to each other yet complementing. So it was really, really fun. We just want to cry. That why? We cannot bear it anymore. But then it's okay. Again, next day we got ready. We were at the backstage praying, and we heard someone playing the same audio track as us. A few similar songs. We were again looking at each other. It's okay. It's just one song that's same. It's okay. It's just one song that's same. Nobody has copied our theme. Nobody has done this, that. And then we went on stage and it was... सफ़र ने सिखाया गिरकर उठना, मुस्कुराना. हर मुश्किल में छुपा था एक सबक पुराना. My confidence, my self-esteem, my self-image, everything improved. Persistence. लगे रहो, हो जाएगा. Taught me that I have to keep faith in myself. I had lots of people telling me I could not do it. I had to keep faith in myself. It taught me to be more self-confident and social. Patience. It's very important. And then I've learned communication. Definitely discipline. Okay, how to discipline yourself and how to groom yourself to excel in one particular thing. कहाँ पर कितना बोलना है, कैसे बोलना है. मेमोरीज, प्यार, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप. सिर्फ डांस का नहीं देखना है, दूसरे इवेंट्स देखो, वो लोग को मोटिवेट करो. Uncertainty, being open to uncertainty. Team building, team bonding. Okay, how you have to deal with things, being the head of the team, but also not feeling not making others feel that you are the head of the team. सबके साथ में काम करना. ये मेरा स्टेज फियर चला गया है अभी. I can speak in front of stage and I will not feel embarrassed even if I make mistakes.
सारे ग रे सारे ग म ग रे सारे ग म प द नि द प द प म ग म प द नि सा नि द प द नि सा रे सा नि द प द प म ग म प म ग म ग रे सा नि द नि सा रे सा. તું ડિઝર્વ કરે છે એ કે તારું ડેડિકેશન આ વસ્તુ ડિઝર્વ કરે છે કે હું નહીં ડિઝર્વ કરતો. સો એક વસ્તુ એ બી જોવા મળે કે આમ કલાના ક્ષેત્રમાં છીએ તો એકબીજા કલાકારના આમ એકબીજા પ્રત્યે કેવું આમ પેલો ભાવ છે કે નહીં યાર તે કેટલું ડેડિકેશન સાથે કરું તો આ તો તું જ ડિઝર્વ કરે છે. સો એક વસ્તુ મેં એ બી જોઈ અને હા થોડીક આમ ટેન્સ થઈ ગઈ હતી તો બધા જ આમ મારી ફસાઈ ગયા હતા. અરે હેલી Money could not buy what you first gave me. It felt like I went blank. Okay, I did get it. And before I could realize, I was on the stage and my legs just went up there without much conscious effort to it. Some other colleges told me there is no chance we're getting into first or second. Let's just not expect. So I was very disappointed in the moment, and I'm like, it's okay, next time maybe. And then ઇલ્સાસનું નામ આવ્યું. I was standing there for 2 minutes. I was numb because I did not expect કે અમે જીતીશું. Like for Indian group મને થોડી expectations હતી કે કદાચ થર્ડ આવી જાય. But for Western I was like no, there is no way we're gonna get this. So I remember everyone was running towards the stage and પછી તપેશ પાછળથી ભાગ્યો and I was like oh તપેશ ભાગ્યો so like આપણું ગ્રુપ છે મારે બી જવાનું છે. And that is when I started running towards the stage. रिजल्ट्स तो हमें पहले से ही मालूम थे भाई. ये तो था कि आपने किए हैं, मेहनत की है तो जीतेंगे. ऑफ कोर्स रिजल्ट आने से पहले इल्सास पहले से ही जैसे नाम आया भाई तुरंत भागते हुए स्टेज पे ट्रॉफी मिलते ही वो जो फीलिंग थी ना. फेस्ट इज अ फेस्टिवल इटसेल्फ. રિઝલ્ટ્સમાં એવું છે કે મહેનત હતી અમારી, બહુ ઘણી મહેનત હતી. હા પણ હવે થાય અમુક વાર જે થયું એ, પણ આગળ જઈને હવે ધ્યાન રાખીશું કે કઈ કઈક નાની નાની ભૂલ છે એને અમે સુધારીશું અને ટ્રાય કરીશું કે નેક્સ્ટ યર જ્યારે અમે મહેનત કરીએ અને આ મહેનત અમે ત્યાં રંગ લાવીએ. टेकिंग दिस ट्रॉफी इसके पीछे भी एक स्टोरी है. आई हैव दैट वीडियो कि जब ऐसा नाम अनाउंसमेंट होता है कि मेरे हाथ में फ़ोन था एंड दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि भाई मुझे सब चीज़ रिकॉर्ड करनी है बिकॉज ये मेरा लास्ट ईयर है. तो मैंने रिकॉर्ड किया था एंड आई वाज जस्ट हैविंग दिस फ़ोन इन माय हैंड एंड इस तरीके से मेरा फ़ोन था. मैंने ऐसे जहाँ पर जैसे बोला इल्सास तो आई रिमेंबर कि मैं पूरा मतलब जैसे इल्सास बोला भाई साहब मैं दौड़ते हुए डायरेक्ट चला गया था स्टेज पर. मेरे को पता नहीं मेरे टीममेट्स आ रहे नहीं आ रहे आई डोंट नो बट जैसे इल्सास बोला गया मैं स्टेज पर पहुंच गया. एंड आई रिमेंबर वन थिंग बहुत फन पार्ट है कि जहाँ पे जो ट्रॉफ़ी देने के लिए आते हैं तो वहाँ पे जो प्रोफेसर थे यहाँ पर वीसी सर थे तो यहाँ वहाँ से ट्रॉफ़ी आई और यहाँ से वो उनको दे रहे थे कि वो हमें ट्रॉफ़ी दे. तो व्हाट हैपेंड एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो सर ट्रॉफ़ी यहाँ देने की बजाय दे रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे दे रहे. तो मुझे पता नहीं वो एक्साइटमेंट के मोमेंट में मैंने उनसे हाथ से छीन लिया. बोलते सर बोलते ओ नहीं 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 तुम्हें नहीं पहले वीसी सर को देने तो वो आपको देंगे. मैं बोला सर दे दो डायरेक्ट अब तो हमारे हाथ की ही ट्रॉफ़ी है हम ये डिज़र्व करते हैं. तो सर ने दिया. अब पता नहीं हमने पाँव उनको पड़े कि नहीं पड़े व्हाट हैपेंड बट वो जो ट्रॉफ़ी जब हाथ में आई ना. મોસ્ટ મેમોરેબલ થિંગ ફોર મી પ્રેક્ટિસ સેશન્સ એ મેમોરેબલ થિંગ્સ છે. પછી જે વચ્ચેના બ્રેક્સ હતા એ ગરબા કરવા એ મેમોરેબલ થિંગ્સ છે. और तो स्टेज परफॉर्मेंस. The last practice, it was the best. Encoding the clues which were given in Treasure Hunt. It's the last practice, man. Like you know that you will not be in that room. Maybe मतलब ऐसा with the same team होगा नहीं होगा कैसा होगा. It's not मतलब in the end ऐसा हो जाता है कि जीतना हारना नहीं. It's like you have learned something so good. और तुम वो जाके बस performance prize it does not matter. So my most beautiful thing that I would say was my last practice with each one of them. हमको जहाँ मौका मिलता है हम आज भी वही चीज़ गाते हैं. तिलक सेरेमनी. I just saw it, Riya, and both of us started crying. It's like, hey, last youth fest आ गया. We are done. It's last. भाई इतने हार्ड प्रैक्टिस के बाद से जब सब कोई साथ में मिलके वो डिनर करता था
रात में से गॉसिप्स होए कि आज भाई ये किया वो किया। बस यूथ फेस्ट जैसे बीतेगा फिर वो सब चीज़ें भी अब चली जाने वाली हैं। फिर कौन कब कहाँ मिलेगा नहीं मालूम। पर मैंने चैन चाह पीवी EDC definitely it has given us beautiful memories. It's a cute small campus, but it has given beautiful memories. This entire 1 year journey at this EDC is quite fascinating. सेमिनार हॉल में सोना खा पी के सो जाते थे जब तक सर नहीं आते थे। उसको मैंने बहुत परेशान किया एक डायलॉग से, दैट वाज The Sanam concert. एक सफर में 1000 लम्हे थे, पर हर किसी ने अपने सफर को सिर्फ एक शब्दों में महसूस किया। तो चलिए सुनते हैं उनकी जर्नी, उनके शब्दों में, बस एक लफ्ज में। अगला क्वेश्चन है, what is difficult? बस Nostalgia for me. Marvelous. Experience. Perseverance. Encouraging. Exciting. Home. Journey. Moment. Love. People. Mind blowing. Friendship. Thrilling. Extraordinary even. It's a courage. Enjoyment. Thriller. Is an emotion. कुछ वर्ड ही नहीं है इसके लिए। Judgment. मैजिक, प्योर मैजिक। It is bittersweet. Amazing. Mind blowing. मजा आ गया। Magical. Dance. स्टोरी, कहानी। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उनका आखिरी यूथ फेस्ट था। I might cry. यूथ फेस्ट ने बारे में વાત કરી is like એક આખો દિવસ બેસીએ ચલો વાતો કરીએ એટલે એક બે લાઈનમાં કે એક બે વર્ડમાં બી એક્સપ્રેસ ના થાય। यूथ फेस्ट इज लाइक ओ यूथ फेस्ट सब कुछ महक तो ले ये दिल जरा संभल तो ले अभी नहीं ज़्यादा ऐसा सारे दोस्त याद आएंगे, सारी मेमोरीज याद आएगी, यूथ फेस्ट याद आएगा, सब ऐसी चीज़ें जो मेरे से ज़्यादा कनेक्ट थी वो सारी चीज़ें मुझे याद आएगी। Lights will I'll get emotional. I will miss youth fest, yeah. And take now your phones and I would miss everything, especially the events. Fix you. ये सफर उनका था, लेकिन अब आगे चलना है नए लोगों को। चलिए सुनते हैं उनका एक छोटा सा संदेश अगले बैच के लिए। पार्टिसिपेट करવું જોઈએ કારણ કે यूथ फेस्ट બહુ મજા કરવાની વસ્તુ છે। सभी चीज में पार्टिसिपेट करो। इतना बड़ा स्टेज है, यहीं से मौके बार नहीं मिलते, सो जस्ट गो फॉर इट, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। हार जीत એ લાસ્ટ વસ્તુ છે, मजा છે, કરી લેવી જોઈએ। पहली बात तो इल्सास में सबको ये लगता है कि भाई इधर कुछ है ही नहीं, ये वो कुछ नहीं कराते हैं ये वो, लेकिन यूथ फेस्ट जो मेन होता है ना इवेंट, तुम भले और किसी में करो चाहे ना करो, बट यूथ फेस्ट में तो तुम करो ही करो, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। और कुछ किया ना किया एक्सपीरियंस यूथ फेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहिए। You come to ILSAS, you experience the thrill of being in ILSAS here. Focus on the process, not the result. Hacks of fun. એન્ડ ઓફ ધ ડે રોજ જેવું લાગશે કે હવે નહીં થાય, બહુ થઈ ગયું, નહીં થાય, બટ મજા આવશે। વધારે પ્રેક્ટિસ કરો. People will talk about you whether you succeed or fail. Do it for yourself, at least for the memories. Be there. That's it. It's gonna be a time you're gonna remember for your lives. Fest is not about winning or losing, it is about learning. This is something that brings the best out of you. It's the result that we all need it, but if we don't get it, there's nothing to regret about. It's not like we didn't work on it. Participant नहीं बनूँ, don't be a participant. It is good. Volunteer नहीं बनूँ, तो it is good. તમારે કંઈ પણ youth festival માં કામ નહીં કરવું, salute છે, ના કરશો. But I used to say in various meetings, જે general meetings હતી એમાં, કે come and be a audience. કે audience બનીને બે clap કરશો ને, that will be a great help to your institute. एक ही मैसेज है, अगर आप में कोई भी स्किल है, थोड़ी भी आपको लग रहा है कि आप इसमें कर सकते हो, पार्टिसिपेट करो। That's it.
तुम यूथ फेस्ट मिस करते हो तो तुम सारी चीज़ें मिस कर रहे हो. Like Nike says, just do it. Tiny, very small hobby of yours. If थोड़ा भी interest है, like in any of the events, please participate. You never know. खींचेंगे ले जाइए. तक आप खुद उतरोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा. इसके अलावा भी बहुत सारी इवेंट्स होती है और सभी इवेंट्स में एटलीस्ट आप जाके ऑडिशन दे दीजिए. દુનિયામાં બધા બધું બોલશે, આપણને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે આપણને કઈ ફિલ્ડની અંદર આપણને નોલેજ પૂરેપૂરું છે. If you're not interested into studying very much, take part in Youth Fest, Enquest. मतलब these are actually the social building for you. प्लीज़ पार्टिसिपेट करो. पार्टिसिपेट, लोग कुछ भी बोले मत सुनो, पार्टिसिपेट करो. You may feel like all these people are talking so much about Youth Fest. It's this big old hoopla. Why are people so interested in it? What's the big deal? I don't see Youth Fest as this competition for college. I think I see it as a platform for growth, for individuals, for you, the viewer. And I believe don't do it for others. Don't do it for the college. Do it for yourself. You deserve this. कर लो, वरना जब खत्म होगा तब ऐसा लगेगा क्यों नहीं किया पार्टिसिपेट. भाई कर लेना चाहिए था, तभी कुछ तो मेमोरीज होगी. और सबसे बड़ी एहसास में मेमोरी तो यूथ फेस्ट की है और कोई नहीं. But if you don't, then you'll regret. तो क्या सोचा, अब तुम्हारा ही नंबर है. क्या तुम आ रहे हो मेरे साथ अगले नए सफर में? What are you doing, man? લાગે છે કે કહી દઉં ત્યારે મને ડેડીએ કીધું, બેટા તું યાદ રાખજે, તું તારો નંબર આવે કે ના આવે, તું મારી માટે first જ. Okay, done. Done. Cut. Stand up.